A very sweet good morning, dear children. Welcome in SST class. Children, your EV1 syllabus, that is chapter number 3, the Northern Plains, that we have completed. Chapter number 4, the Western Desert, that is in process. Chapter number 5, 6 and 8. So all the chapters I'm telling you again. Chapter number 3, 4, 5, 6 and 8. This is the syllabus of EV1. And chapter number 3 that is completed. And chapter number 4 reading that is also completed. But today we are having a recap of the chapter, the Western Desert, the Great Indian Desert. Chapter number 4. Children, in this chapter, I told you what is the meaning of desert. A hot and dry region with sandy soil and very little rainfall and vegetation. That is called desert. Okay. And what are sand dunes? The low hills of sands. The low hills of sand in a desert. That is called sand dunes. Okay. And what are nomads? Nomads, a group of people who move from one place to another in search of water and food, that are called nomads. Okay, इनको बंजारास भी बोलते हैं. Am I right? Isn't it? Yes, Banjaras also. Now, it's a very special term I'm telling you about, oasis. What is an oasis? An area in the hot and dry desert region. Isn't it? Hot or dry desert region में where underground water comes to the surface through a spring, that is called an oasis. What is Karwa? Karwa, a group of camel moving across the desert, that is called Karwa. Clear? And one more term I'm telling you about. What is mining? The process of taking out minerals from the earth, that is called mining. And overgrazing, what is that? When the animals eat more than available grass and damage the land, that is called overgrazing. So all these terms, these are new terms in this chapter. So you have to keep in mind all these terms. Now I'm telling you about the climate. Here the climate is very hot and dry. इस रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है, बहुत हॉट एंड ड्राई होता है. ओके, थ्रू आउट द ईयर देयर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. ड्यूरिंग द समर सीजन द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर कूल. ड्यूरिंग द विंटर सीजन डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर वेरी cold. Okay, the hot and dry climate means that big trees can't grow here. Only plants that can survive on little water grow here. Okay, so for example, cactus, isn't it? So now you just say, यहाँ की लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. यहाँ जो है हार्श लिविंग कंडीशंस हैं, इजंट इट? यहाँ के लोगों को डोमेस्टिक यूज के लिए भी जो विलेजेस में है वाटर बहुत दूर से लाना पड़ता है. इट्स नॉट इजी टास्क. ओके, सो वाटर गवर्नमेंट ने क्या किया? व्हाट गवर्नमेंट हैज डन? गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो बिल्ड किया. उससे जो उसमें जो वाटर होता है वो सतलुज रिवर से इसमें वाटर आता है. उससे क्या होता है वहां पे? दिस कैनाल हेल्प फार्मर्स टू ग्रो different crops such as wheat, jawar and bajra, and it has made large part of Rajasthan green. So clear? Indira Gandhi Canal. So now life जो है यहाँ very harsh है because of adverse climatic conditions. यहाँ जो extreme temperature होता है, scanty rainfall, scarcity of water means absence of suitable conditions. जो यहाँ लिविंग कंडीशंस जो हैं, ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है. सो क्लियर? दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत लो है. ओके, सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एनिमल रेयरिंग एंड क्वेरिंग. ओके, माइनिंग I told you the process of taking out minerals from the earth, that is called mining. So it is clear. The animals reared here are sheep, goat, camel and cattle. Due to the presence of minerals like copper, silver and limestone, mining also takes place here. This region has marble rocks on a large scale. Okay.
एंड यहाँ की जो हाउसेज हैं, यहाँ की रूफ्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं. हाउसेज की रूफ्स जो हैं वो फ्लैट होती हैं. एंड द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर केप्ट थिक इनफ टू कीप देम cool. Okay, the underground tanks are also preferred so as to save rainwater, as tanks are called tankas. Some people lead a nomadic life. As I told you, what are nomads? A group of people who move from place to place in search of water and food, that are called nomads. तो यहाँ की लोगों की जो लाइफ है nomadic life है. Okay, they travel on camels across the desert in groups called caravans. So what are caravans? A group of camels moving across the desert. A group of camels moving across the desert. That is called caravans. So it is clear. So now you just see ship of desert. That is camel, because it can live without food and water for many days. Camel without food and water for many days, and it can walk easily in sand. Okay, बहुत इजिली बिकॉज ऑफ पैडेड फीट. इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू वॉक ऑन द सैंड. कैमल, राइट? So they can live without water for many days, and their padded feet enable them to walk in the sand easily. Camels also called the sheep of the desert. It's very useful animal in the desert. So clear? So now people of Rajasthan are highly skilled in handicrafts. Okay, and tie and dye, embroidery, okay, and jewelry making, बिदरी वर्क, स्टोन वर्क, इनमें एक्सपर्ट होते हैं. और हमारे कंट्री को बहुत सा इनकम जो है इन हैंडीक्राफ्ट से मिलता है, बिकॉज एक्सपोर्ट करते हैं और इनकम जो है वो हमारे कंट्री को होती है. ओके, अ कलरफुल एंड रिच कल्चर प्रिवेल्स इन द डेजर्ट रीजन. राजस्थानीज हैव अ ग्रेट पैशन ऑफ म्यूजिक एंड dance. Okay, in Rajasthan men wear dhotis, okay, kurtas and colorful turbans, and women wear bright colored dresses, घाघरा and cholis with odhnis. ये लोग अपने हेड को हमेशा कवर करके रखते हैं बिकॉज ऑफ मतलब इस स्कॉचिंग सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट्स वाई. ओके, and Jainism and Hinduism are the major religions of the people of Rajasthan. So it is clear, children. People of Rajasthan speak Rajasthani, and यहाँ की फेमस जो डांस है ना, कालबेलिया, चारी, घूमर, फाग, कच्ची घोड़ी, ये सब फोक डांसेस हैं यहाँ के. ओके, और यहाँ के जो मेले हैं यहाँ की वो भी बहुत फेमस है. यहाँ के जो यू जस्ट सी पुष्कर मेला, कैटल फेयर, important festivals of Rajasthan. A large number of tourists from all over the world visit Rajasthan every year. And यहाँ के जो forts हैं वो भी बहुत famous है. Okay, and यहाँ जो यहाँ की capital है that is Jaipur. That is also called Pink City. So children, you have to read about this chapter thoroughly. Okay children, and you have to try to solve the exercises part from page number 31 and page number 32. You just try to solve the exercises part. Tomorrow we'll do the exercise. Okay children, have a wonderful time. Bye bye.